what is the percentage that, since you have been in this field for a very long time, अपने इंडिया में what is the percentage of people that are, what you feel, are affected actually by sleep apnea and are not diagnosed? Because ये समझ में आ रहा है कि लोग स्नोर करते हैं, like you said, अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन के पास स्लीप डिसऑर्डर्स का कोई ना कोई कंप्लेंट होगा, एंड उसमें से अराउंड 10% वुड बी हैविंग स्लीप एपनिया. so that's a sizable number. हाँ, एंड बिकॉज ऑफ आवर वेट, बिकॉज ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन में आजकल ओबेसिटी इज अ एपिडेमिक हियर, हाइपरटेंशन इज एन एपिडेमिक हियर, तो उसमें होना बहुत इज वेरी कॉमन, हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. So, you said 30% of the population is affected, right? So, are we really prepared to cater to that kind of population which is actually suffering from the condition? you ask me in today's date? 2 years back, no. अभी भी अगर आप बोलेंगे तो I would still say in a very critic way, I'll say we are still no. Lot of work still needs to be done. Lot of work to do. 30% that you were talking about. What would be the percentage? Is it only that older people get sleep apnea, or we have It is present through teenagers? it's one What's your disorder. experience? It's one disorder which can happen both in pediatrics, which in young adults, middle age, old age, everything. Old age after 50 the muscles lose their tone, muscles ढीला हो जाता है, तो स्लीप एपनिया होने का चांसेस वैसे ही बहुत, तो मॉडरेट आपको मिल ही जाएगा. बट अगर यंग एज में किसी को मिल गया, बट देयर आर सर्टेन पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स, पेरेविली सिंड्रोम, उसके बाद डाउन सिंड्रोम भी है, उन बच्चों का स्लीप एपनिया का भी. देन यंग एडल्ट्स का भी होता है, ओबेसिटी है. देन वी हैव besides sleep apnea we can have other diseases like narcolepsy also. Narcolepsy is a disorder, neurological disorder. It occurs in generally people whose age is around 17 to 18, 18 to 20 years. Okay. उसमें भी होता है. So it's not a disease कि आपका ये खाली एक एज में होगा. It can happen to any people of any population, any age group.